Good evening, everyone. On behalf of Riva Engineering College, it is a great pleasure to gather our audience for today's session. Serving the nation since 1964, Riva Engineering College has grown significantly. Our college boasts MBA graduates undergraduate and postgraduate programs on campus. Today's session, an initiative by Training and Placement Cell and REC Pedia, is part of Alumni Circle Hirak Jayanti lecture series, featuring esteemed alumni. This golden opportunity allows us to organize impactful lectures to inspire and motivate students and faculty during their academic journey. These lecture series not only foster a robust campus innovation and guidance ecosystem, but also strengthen connection with alumni at both regional and national levels. The mission of our alumni circle is to provide guidance, host technical talks,
offer placement assistance, and develop essential soft skills to ensure students are job ready. Through a supportive network of alumni, we aim to equip students with knowledge and resources they need to excel in their professional endeavors. Today, we are privileged to have our guest, Mr. I.K. Pandey sir, our esteemed alumni. Now, I would like to call Suranjali for welcoming our guest. Over to you, Suranjali. Thank you, Anushya. Good evening, everyone, respected esteemed alumni, seniors, and all audience members. It is an honor to have you all here today for this special event. Today, we have a very special guest with us. It is my privilege to welcome Mr. I.K. Pandey, sir. We are incredibly fortunate to have him with us today. He will be sharing his insights on personality development, a topic that is crucial for all of us as we explore new ways to innovate and grow in our academic and professional lives. We are excited to learn from his experiences and gain valuable guidance from someone who has made significant contributions in his field. Please join me in welcoming Mr. I.K. Pandey, sir. Sir, we are honored to have you here today. Thank you. Over Thank to you, you, Anushka. Suranjali. Thank you, Suranjali. Now, I would like to call 𝒊𝒔𝒏𝒕 to introduce our guest. Thank you, sir. 𝒊𝒔𝒏𝒕? An eminent engineer. Am I audible? Yes, yes. Now you are. Thank you. Uh, Good evening, everyone. It's my honor to introduce you all to Sri I.K. Pandey, sir, an eminent engineer and former Director General, Road Development and a Special Secretary in the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. Pandey, sir, graduated in Civil Engineering in 1982 and went on to pursue a Master's in Foundation Engineering. He further expanded his expertise with specialized courses in environmental impact assessment and auditing from the University of Bradford, UK, and advanced bridge engineering at the Tokyo International Center, Japan. With a career spanning over 38 years, Pandey has played a, a pivotal role in the execution of more than 2,000 prestigious highway and bridge projects across India. He has served in various capacities within the Ministry of Road Transport and Highways, as well as the National Highway Authority of India and the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, where he guided them on the technical and the contractual matters. As the founder of Road Valta, Pandisar has also contributed significantly to the Indian Roads Congress, chairing key committees that were instrumental in finalizing important specifications and codes. His commitment to environmental protection, sustainable infrastructure development, and dispute resolution has been a hallmark of his career. Today, Pandesar will be sharing his invaluable insights on the importance of personality development and how to be a successful engineer. Over to you, Anushya. Thank you so much, 𝒊𝒔𝒏𝒕. Now, I would like to call our esteemed guest to share his knowledge and experience with the audience. Over to you, sir. Thank you, Shreya. Good afternoon, good evening to all the participants, the budding engineers of the Riva Engineering College, and my colleague, Mr. Mishra. Today, I'll be discussing or chatting on a topic that is personality development, how to be a successful engineer. Although the topic is uh, said like successful engineer, but it is applicable to all the persons, all the people whosoever want to be a successful man. What is a success? I mean, how we define the success depends on how you perceive the success. It depends on your skill. It depends on your behavior. It depends on your the resources and your commitment to your own goal satisfaction. Success always poses challenges, as you know. Whenever you embark on a particular project,
you come across many, difficulties like skill, uh, lack of skill, a lack of resources, lack of your team, and lack of proper guidance. Moreover, there are many difficulties come across when you execute a project from the other stakeholders, who are the other government authorities as well as the users of the project. So it is always a challenging job to execute a project and successfully come out of it. How you perceive the success, is it only getting a power and authority? That means a good prestigious post and money, or it is something else. In my perception, it the yardstick of success depends on many other aspects as well. And the first of all, I consider it is the perfect health with all those career and prospects achieved in your life span. If you are able to keep your health perfect, you are really, in my opinion, a successful person. Besides that, the prestige, the social recognition which you achieve by doing your work in the field uh, gives you a very good satisfaction, and that is also a yardstick for the success. Besides that, if you are able to do proper parenting, I mean, you are able to take care of your children, their welfare, their education, their health issues, that is also a yardstick for success. And last but not least, in my opinion, is the family relations and the friend circle, which is always available to you for your help in any aspect of the difficulties which you feel around during your lifespan. Today, we are celebrating the Ganesh Chaturthi festival. We are inviting, हम लोग आवाहन कर रहे हैं भगवान गणेश का कि वो आएं और हमें आशीर्वाद दें, विद्या और बुद्धि दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, सक्सेसफुल हो सकें। ऐसे बहुत सारी कर्मकांड पूजा करते हैं, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। जब आप भगवान गणेश से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं, तो वो डेफिनेटली आज कहने वाले हैं तथास्तु, आपको वो विद्या और बुद्धि। बट उनका एक और कंडीशन है कि कुछ आप मेरे से लर्न करो, मेरे character से learn करो, and if you can learn from the character of the Ganesh, you will certainly be a successful person. Let's see what is the character of the Ganesh. गणेश जी का बहुत बड़ा सिर है. What does it mean? That means he's full of wisdom and knowledge. Likewise, आपको भी knowledge, skill, informations जहां से भी जैसे भी मिल सके आपको कलेक्ट करनी है और अपने आप को स्किलफुल बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है. लेकिन ये सारी स्किल और नॉलेज गेन करने के बाद आप कहीं इतना गर्वित ना हो जाएं, इतना घमंड में ना आ जाएं कि आप किसी से ठीक से बात ना कर सकें, अपनी बात को ट्रांसैक्ट ना कर सकें, दूसरे को हमेशा कम समझें. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स गणेश जी की क्या है? उनके सिर पे चंद्रमा का निशान है. दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ कूल. आप हमेशा अपनी लिमिट में रहें, अपने शांत स्वभाव में रहें. आप अपने नॉलेज के कारण अपने को दूसरे के सामने ऐसा प्रदर्शित ना करें कि आप बहुत ही गंभीर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गणेश के बड़े कान, लार्ज ईयर्स. दैट मीन्स you should always keep your ears open. You should be a good listener rather than talking to your ideas and this thing. जब तक आप दूसरों की बात सुनेंगे, उनसे अच्छी बातें आप जान. यदि कहीं डिस्प्यूट भी हुआ है तो आप सारी इंफॉर्मेशन लेके एक प्रॉपर डिसीजन कर पाएंगे. इसलिए ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. गणेश जी के पास एक लॉज स्ट्रेंथ है, जिससे वो आज कोई भी चीज
खाने के लिए लेने के लिए Sir, ये सुनने की could sir, be invite. Hello, are you? I am not able to. no, sir. Uh, Hello, sir. Sorry to interrupt, but can you put the screen in slideshow? Left bottom corner में third option. bottom corner. Left bottom. No, There are I three think options. okay, but Yes, sir. Click on that. okay, Okay, sir. okay, Okay, right. sorry. Okay, thank you. So this, capability, taking risk around you. You are living in a particular environment. आप चारों तरफ अपनी नजरें खुली, कान खुली रखिए और आप देखें कि क्या क्या डिफिकल्टीज या रिस्क हो सकती हैं और उन रिस्क को आप कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये स्किल आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गणेश जी की है लार्ज बेली। दैट मीन्स आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी नॉलेज है, उसे आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे ताकि आप अपने ट्रस्ट को डिपार्टमेंट के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेंटेन कर सकें। एंड दिस इज वन ऑफ द most important characteristics to keep a trust with the organization. और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करें अपने आप। नेक्स्ट, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान गणेश की देखें तो उनकी कमर में सर्प का बेल्ट जैसा बंधा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ऑलवेज रिमेन अटेंटिव। यदि हम सर्प की ही बात कर लें, तो यदि आप अटेंटिव नहीं हैं तो सर्प आपको डर सकता है। इसका यदि मैथोलॉजिकली तो सर्प है, लेकिन कहने का मतलब डिफिकल्टीज है, रिस्क है, which can harm you if you are not attentive enough. And the last but not least, the rat or चूहा, जिसके ऊपर भगवान गणेश बैठे हुए हैं। चूहा एक कटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, एक विघ्न है, जिसको कि गणेश जी ने उसकी सवारी कर ली। सवारी कर ली मीन्स उसको मैनेज कर लिया। आप भी ऐसा ही बनिए, आप हर डिफिकल्टी को मैनेज करने वाला बनिए। तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो भगवान गणेश के बॉडी स्ट्रक्चर से या उनकी मैथोलॉजिकली रिप्रेजेंटेशन से हमें प्राप्त हो रही हैं, उनको यदि हम इम्बाइब कर सकें और यदि उनको फॉलो कर सकें अपनी लाइफ में, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें हम सक्सेसफुल ना। Now, when you are doing a work or you are moving in a project site, you have to know who are the stakeholders and whether you are working as a government officer or as a consultant or as a contractor. मैं ये सारी बातें, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने सारे प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं। References are of course coming from the civil engineering side, but they apply to all the projects, whatever field you are going into that. Okay, so जब भी कोई भी हम फील्ड मिशंस की जो पॉलिसीज हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, वो हमें फॉलो करने हैं, और वो क्या रेगुलेशंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स क्या हैं, क्वालिटी की एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है, ये हमें जरूर पता होनी चाहिए, और हम उनको किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। If you are working as a consultant or as a supervisor of a consultant, you must know all these specifications and procedures. कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यदि आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो आजकल आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ दी वर्क जो है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में किए जा रहे हैं। इसका मतलब है इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर को ही डिजाइन्स बनानी है, उसे वर्क एक्सिक्यूट करना है, और एक निर्धारित समय के लिए उसे मेंटेन और ऑपरेट भी करना है। उसे भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए
यदि आपका रोल एज ए कॉन्ट्रैक्टर है, then also you have to know all these requirements from other stakeholders. इसके साथ ही दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट उनके इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यदि आप एक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सड़क का कार्य कर रहे हैं, आपको लैंड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट है या फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उनकी क्या गाइडलाइंस हैं ये आपको जाननी पड़ेगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आर मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, सो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको जाननी चाहिए। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप प्रोजेक्ट किसके लिए कर रहे हैं, कौन है यूजर आपका। यदि यूजर उस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड फील करता है, ही फील सेफ इनफ, देन यू आर रियली अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर। एंड साथ ही आपको ये नज़र रखनी है, जो दूसरे वॉच डॉग्स हैं, मीडिया है, एनवायरमेंटलिस्ट है, एनजीओज हैं, जो आपके द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप ऐसा कोई भी काम जो इस गाइडलाइंस या कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही है या सेफ एनवायरनमेंट में आप काम नहीं कर रहे हैं। So with this background, I come to tell you that in my opinion there are 5 Ds of success for an engineer or for anybody who is doing work. That is, first is dialing. Dialing means the connecting people. आप लोगों को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं, कितने रिसोर्सफुल हैं आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि पहली सीढ़ी है किसी भी काम को पहले तो प्राप्त करने के लिए और फिर काम करने के लिए। नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव ए गुड स्किल फॉर ड्राफ्टिंग योर प्रोजेक्ट। ड्राफ्टिंग मीन्स आप कैसे प्लान करते हैं प्रोजेक्ट को, एक समयबद्ध तरीके में कैसे काम कर पाएंगे, उसकी प्लानिंग, उसका बजट, उसकी शेड्यूलिंग, उसमें क्या रिसोर्सेज लगेंगे, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसी स्किल आपको डेवलप करनी है अपने आप में। और जब आपने प्रोजेक्ट उन सब चीज़ों को बना लिया, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको अप्रूवल किसी न किसी अथॉरिटी की लेनी है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। You have to have a skill to present your case in a very convincing manner, and you have to show that this project is going to be a useful project, beneficial project for economic and financial development of the organization as well as the users. और इसके क्या फर्दर अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने में सफल हो सकें। ये 3 चीज करने के बाद आप आते हैं काम को अब एक्सिक्यूट करना शुरू करते हैं। तो आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को कैसे ड्राइव करते हैं। यू मस्ट हैव द स्किल फॉर ड्राइविंग योर टीम, योर रिसोर्सेज, मैन, मटीरियल, मशीन, इनका सबका कैसे आप शेड्यूलिंग करेंगे, किस तरह से आप सबको साथ लेके चल सकते हैं, कैसे आप पर्सनल बिहेवियर रखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ताकि एक सिनर्जी बनी रहे और टीम मेंबर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है which has to have for a successful career. And last but not least is the delivery. Delivery of a project has to be ensured within the given time and given budget, और एक वो environmentally sustainable हो, सेफ हो, यूजर के लिए सेटिस्फैक्शन हो, जिससे ऐसी सुनिश्चित करती हैं। इन डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए ये चारों पहले जो भी आपको डीज लिखी हैं, they have to be perfected, and then when you can deliver the project. Next, coming to how can you connect the peoples, how can you convince peoples from your ideas, then a
tool is there that is called transactional analysis, which identifies three ego states of a personal behavior. That is parent, adult, and child. These ego states have been, cultivated or acquired from your childhood. And these refers to the thoughts and feelings, behavior which you have acquired, which you have learned from your parents in the parent ego state. And when you are talking as an adult ego state, you do not have any baggage of parent or child ego state. And you are talking in a rational, logical manner with all facts and figures, which can always be satisfied for the demand of the project or demand of the discussions. The child state refers to how you have behaved in your childhood. And the same way you reflect your emotions and spontaneous relations during discussions. So these attributes has to be understood in what ego state you always transact. And the transactional analysis is the tool by which you can analyze your behavior. You can analyze really whether you are talking in an adult you are talking in a parent or child ego state, and whether there is a need to change the mode of this ego state for a fruitful discussion, getting a decision on a particular topic. So, how this works is there are three types of transactions. First is complementary transaction, which refers to when the two persons have similar type of thoughts, similar type of ideas, and has a harmony in their talking behavior. And that can always happen with adult to adult talk, which is not affected by any baggage of parent or child ego states. यदि आप parent complementary state पे तो दोनों ही अपनी अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करेंगे और शायद डिसीजन नहीं हो पाए. सेम वे चाइल्ड टू चाइल्ड बिहेवियर में जैसा चाइल्ड बिहेव करता है, या तो मैं जिद्दी टाइप का हूँ और मुझे ही ये चाहिए, और दूसरा है या तो नाराज होकर बैठ जाएगा. इन both these states not a fruitful discussion states. Then another type of transaction is ulterior transaction. इसका मतलब ये है कि हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं. For example, a boss says to a subordinate that you can do this job subject to condition that you acquire these skills. Okay, I'll show you how I can achieve this thing without bothering about your my behavior or my skills. ये दोनों ही transactions has a ulterior motives behind what they are talking. This is also not a better transaction and need. The last, another type of transaction, which is cross transaction, is parent to child or parent to child. Both the persons are behaving like a parent and considering other person like a child. कहने का मतलब ये कि मैं सुपीरियर हूँ तो मैं कुछ नहीं आता. ऐसी सिचुएशंस में कभी भी डिस्कशंस प्रॉपर नहीं हो सकता, and this leads to either breaking of the relations, या एक दूसरे से आप फिर कभी बात नहीं करना चाहेंगे. This is also not a better transaction perspective, and you need to correct it. ये तीन जो ट्रांसैक्शनल एनालिसिस की फेजेस हैं, यदि इनको हम समझ जाएं और इनको करेक्ट कर सकें तो हम बहुत सारी जो
लिमिटेशंस हैं अपने बिहेवियर के, उसे दूर कर सकते हैं, एंड दिस विल सर्टेनली हेल्प अस इन मूविंग आवर further extension to this transactional analysis. There are three phases. In phase one, we say, I'm okay with you. Whatever you are talking, I'm okay with it. And you also say that well, I consider whatever you're saying is okay. ये एक एडल्ट टू एडल्ट ट्रांसैक्शन की कंडीशन जो कि और एक डिसीजन है, एक टीम और सिनर्जी the person can achieve its goal. सेकेंड स्टेज या सेकेंड फेज ये हो सकती है कि मैं तो आपसे सहमत हूं और आप मेरे से सहमत नहीं। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं सहमत नहीं हूं, आप सहमत। इन आइदर ऑफ द कंडीशंस हम या तो अगले व्यक्ति से सहमत हो जाएं, उससे कन्विंस हो जाएं, या अपने लॉजिक और रीजन से उसे कन्विंस कर सकें। इन ये करेक्शन यदि हम कर सके, then we can always move ahead and form a good team. And the third phase is neither I am okay nor you are okay. In that case, there is always going to be a conflict and break in relationship. So this has to be avoided by talking to in a personal life as well. These are the basic things you have to develop yourself. Then बिहेवियर के बारे में बात करने के बाद में ये भी बहुत ही आवश्यक है कि आप एक परफेक्ट हेल्थ मेंटेन करें, और उसके लिए हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं, वेद हैं, वो कहते हैं, तीन चीजें कहते हैं, दैट इज हित भुक, मित भुक और हित भुक। हित भुक का मतलब है आप उन चीजों को ग्रहण करें, उनको चीजों को जो आपके लिए हितकारी है, जो फायदेमंद है, जो हेल्थ को इम्प्रूव करें, जो आपको नुकसान करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है हेतु भुक, इतना ही खाएं जितना बॉडी के लिए आवश्यक है। ज्यादा खाएंगे स्टमक अपसेट होगा, आलस आएगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ओवरवेट हो जाएंगे। सो ऑलवेज मेंटेन दैट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इज रिक्वायर्ड, only that is to be consumed. And third and most important is ऋतु, that means जो उस सीजन में नेचर दे रही है, हम उसी को ग्रहण करें। नेचुरल चीजें जो जिस सीजन में मिल रही हैं, दे आर ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड कीप योर हेल्थ always in check and good and perfect state, because sound mind can be there only in good health. Now, coming to the second aspect of D, that is drafting. आपको कोई भी जॉब असाइन होती है, आप किसी काम में जाते हैं, नई जॉब एक्वायर करते हैं, how you will plan to work is very important. And the first step is understand your job profile. उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंसेस कैसे मेंटेन करेंगे, उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उनके गुड प्रोसीजर्स क्या है, डिजाइनिंग प्रोसीजर्स क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए। ये सारी स्किल आपको एक्वायर करनी है, इनको देखना है कि आपके पास है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज असेस योरसेल्फ whether you are capable, whether you have all those skills to perform this task. And if you find that this is something is lacking from your side, then don't hide your ignorance. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं नहीं हम सब कर लेंगे, but be confident, always do not hide your ignorance, और उस स्किल को किसी भी तरह से जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज मिल सकता है, उसे गेन करें और अपने को स्किलफुल बनाएं।
इतना करने के बाद में आपको अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है। ईच एक्टिविटी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, मेन मटेरियल, machines and time has to be properly scheduled and मैं उसे कहता हूँ टेबल क्लियरेंस, डेली टेबल क्लियरेंस। डेली टेबल क्लियरेंस का मतलब है कि जो आज आपको काम करना था एज पर शेड्यूल, आप उसे पूरा करके जाएं, अपनी टेबल क्लियर करके जाएं। इसके दो फायदे होंगे। पहला ये कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं महसूस होगा जब आप घर जाएंगे, एंड सेकंड, यू विल बी एबल टू डिवोट योर टाइम विथ योर फैमिली इन अ गुड एनवायरमेंट। एक प्रॉपर तरीके से आप अपने टाइम दे पाएंगे विदाउट स्ट्रेस। एंड next characteristics which you have to develop is monitor your achievement, errors, omissions, success on regular basis. Maintain a diary. That is a very, very important document which will keep you informing your errors, omissions, and give you an opportunity to learn how to mitigate those errors, how to correct those errors. In case of errors and omissions, time your schedules and keep on going. The job planning cycle is really a very, very important, I mean, uh, method for keeping yourself abreast of the project, which will allow you to complete the project in time and with your desired goal. Next step or very important thing is choosing a technology. जब आप किसी प्रोजेक्ट को करने वाले हैं तो क्या आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट का। इसे बहुत ही सावधानी के साथ चूज करने की ज़रूरत है, और इसमें मैं कहूँगा देश काल अवसर अनुसार ही आप प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी को चूज करें। एग्जाम्पल के बतौर पे हम एक रोड प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आप एक ऐसी रिमोट एरिया में हैं जिसमें आपकी एसेसिबिलिटी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे आप किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और यदि वो आप category of the road is also not very important, then you have to go for local technology, local labor, local material available around, and make your choice accordingly for the technology. Substrata कैसा है, material, marginal materials available हैं या better materials available हैं, उस पर भी depend करता है कि आप क्या technology follow करें. And aesthetics also plays a very great role for user satisfaction, so this also to be kept in mind. And most important is the budget. आप जो बजट आपको दिया गया है उसी बजट पे आप प्रोजेक्ट आपने टेक्नोलॉजी चूज कर ली, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, and you have gone to a project execution phase. Now you have to understand how to control the, and for that you have to do a resource planning. At least the 4 M's has to be very carefully monitored and controlled. That is the men, material, machine, and money. Time, of course, is the essence of the contract, without which any success or any goal achievement cannot be appreciated. तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो आप प्लानिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वो बार चार्ट कर सकते हैं, जिसमें ईच एक्टिविटी में क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उनको आप सीक्वेंसली आप बार चार्ट फॉर्म में रख सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं. If this is a simple project, this is well and good enough for controlling your
project reviews and status. But if the project is a little complex and it is a civil project, then you have to go for critical path methods, where you find that the critical activities can be completed different roads, and so that you can any eventuality can be addressed accordingly. If facts items are to be monitored, then you can go for the patch. And these days, many softwares are available. Primavera, project management softwares. Latest is the BIM, that is Building Information Modules, where all stakeholders can interact with each other on the same platform, which gives a very good opportunity to control the project. So this part of has to be mastered for any successful completion of the project. And whenever you are doing work, you are leading a team or you are a member of the team, own responsibility for your errors, omissions or success. किसी भी error को, किसी भी को आप हाइड करके सक्सेस नहीं गेन कर सकते हैं. यदि आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो their errors and omission is also your responsibility, because you have to train them accordingly to get a proper work done. So never shirk from your responsibility, take the lead, always own responsibility. And for achieving all those things, you need to have a concentration, good concentration of mind. Concentration के लिए I'll suggest do some meditations, either in the morning or in the evening. Then you will be able to even improve your willpower and self-confidence. यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सक्सेस रिलेटेड टू a psychosomatic impressions of your mind. So keep in mind that always have a positive attitude towards a problem and try to resolve it rather than leaving it or just saying that this is not possible. Okay. So कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन की मैंने बात की. जब आप मेडिटेशन करेंगे, हो सकता है आप सब इसमें पहले से कर रहे होंगे, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं. तो जब आप करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें आती हैं. आप यदि केवल इतना ही कर लें कि आपने दिन भर में क्या किया है और उन चीज़ों में से किस चीज़ में गलती हुई है, क्या सही करना चाहिए था, यदि इन्हीं चीज़ों को हम रिकैपिचुलेट कर लें तो भी हम अपने कंसंट्रेशन को बेटर कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब एवरी मॉर्निंग 5 मिनट का समय आप अपने को दीजिए और उस 5 मिनट्स में आपको वो सारी चीज़ें लिस्ट आउट करनी है, पेपर पे लिस्ट आउट करनी है कि आप दिन भर में क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, किस टाइम पे करेंगे. दिस विल certainly resolve your stressful behavior or give you a complete peace of mind to do these activities. Always maintain a diary. And जैसा अभी बात कर रहे थे, शाम का समय 5 मिनट 10 मिनट जो भी है आप जरूर दें अपने आप को, जिसमें आप रिकैपिचुलेट करें कि आपने दिन भर में क्या किया. उसमें आपको कहीं डिफिकल्टी आई, कहीं आपसे एरर हुई, उनको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए. तो आप अपने आप को बेटर तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, which will certainly go a long way in achieving your targets and goals. Next fundamental principle is, आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा काम या बड़ा काम या जो भी है, उसको होलिस्टिक मैनर में देखिए. Observe the project as a whole project.
The basic principles of survey, that is hold to the path, has to be followed. And उसके बाद आप उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनमें कंसंट्रेट करें. ऑलवेज कीप ए वेरी कीन ऑब्जर्वेशन हैबिट्स. आप आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रोसीजर्स कैसे हो रहे हैं, क्वालिटी एस्पेक्ट्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, उन पे हमेशा कीन ऑब्जर्वेशन रखें. We have already discussed that decide the technology based on the place, time, resources, and opportunities around. तो फाइनली स्ट्रेटेजी क्या हम फॉलो करें, जहां से भी जिस भी तरह से हम नॉलेज गेन कर सके, स्किल गेन करें, किस लेवल से कर सकते हैं, ऊपर हमसे सीनियर लेवल से कर सकते हैं, फिर जूनियर लेवल से कर सकते हैं. विदाउट hesitation, you must learn all these things. And इंजीनियर को तो हमेशा लर्नर ही रहना चाहिए. Every time he should keep on learning. And another important quality is you should also learn to learn the rudimentary concepts which are erroneous and has not been found perfect enough to seek the goal. ये छोटे से थोड़े से टिप्स हैं जब आप टीम में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. then always keep in mind that boss is always right. and अपनी ignorance को never hide your ignorance और उसे करेक्ट करने की कोशिश करें, नॉलेज स्किल गेन करें. because next step is ignorance is no excuse. आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि नहीं आपको नहीं पता. यदि गलती होती है you will be held responsible for that. and in a meeting जब जरूरत हो तभी बोलें, अनावश्यक रूप से आप कभी मत बोलें. यही एक बेटर चॉइस होगी. और जब आप एक सीनियर मीटिंग में हैं, आपका बॉस उपलब्ध है और वो अपने सीनियर्स को प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप बीच में खड़े होकर यदि कोई इंफॉर्मेशन मिस हो रही है आपके इमीडिएट बॉस से, उसे मत बोलें. उसे एक स्लिप दे के उसे इन्फॉर्म करें ताकि वो प्रेजेंट कर सके. क्योंकि यदि आप बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने good behavior. So keep in mind. Now, महामंत्र ऑफ फॉर सक्सेस, मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल. जहां भी रहें अपने को इंडिस्पेंसिबल बना. इंडिस्पेंसिबल आप कैसे हो सकते हैं? पहले तो आप जो काम कर रहे हैं उसके 100% एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, विदाउट एनी फ्लॉ. यू मस्ट गेट ऑल दोज स्किल्स, नॉलेज. ओके. एंड कीप थिंग्स इन ऑन टिप्स. आपकी जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, उसकी इन्वेंट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए यदि आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपकी जुरिस्डिक्शन में जो टोटल रोड लेंथ है उसमें कितने ब्रिजेज हैं, उसमें से कितने खराब हैं और कितने पैसे लगेंगे रिहेबिलिटेशन के लिए. डोंट से आई विल सी माई रिकॉर्ड्स एंड टेल यू. यू शुड हैव दीज थिंग्स इन द टिप्स. एंड डेली का काम डेली करिए, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट. यदि आप किसी भी चीज़ को आज छोड़ देते हैं, कल आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होकर आ सकती है. कहा भी गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो. यदि आप ये 3 एट्रीब्यूट्स फॉलो करते हैं, you can always make yourself indispensable for the organization and nobody would like to leave you, and you will always be kept in good regard and always in demand. Finally, I'm referring to this Brahma of the Vedas, that is Aham Brahma. मतलब है you are the creator, I am the creator. मैंने गलती की है, मैंने सक्सेस की है, उसका क्रिएटर मैं हूँ. मैंने जो ही किया है वही मुझे मिल रहा है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है. So keep in mind, I think time is already ticking. So I'll say thank you at this moment. Or should I just run about one more thing? That is the good engineering practice. What do you understand by the good engineering practice?
This is one of the basic obligation in any of the contract that one has to follow the good engineering practice. And good engineering practice means a combination of specifications, codal provisions, guidelines, established procedures, established uh, evaluation procedures, acceptance criteria, quality assurance procedures, non-compliances, how to be rectified, and all the environmental protection measures have been taken, including the safety norm. All these things have been taken care of, ensures a good engineering practice. And good engineering practice revolves on three uh, items, that is project engineering and common good practices and operation and maintenance in a perfect manner. When we talk about the project engineering, then we have to understand what are the core concepts of the good engineering practices. That is the risk analysis and management. You have to have the skill to make an assessment of various risks which are going to occur in a particular project. And you have to know what are the remedial measures, which are the management techniques to mitigate those risks. And next is you have to keep an eye on the cost and time, because time is the essence of the contract. If you are able to complete your project in time, you will be able to control your cost as well. And next item is the quality assurance. Any project which is not meeting any of the quality uh, assurance criteria or acceptance criteria, it is likely to be rejected. So you keep in mind. And last but not least, keep yourself organized, keep the organization under control, keep your team under control, and take everybody along with you to successfully achieve your targets and goals. These are primary responsibilities of a project engineer, which we have already talked about a lot of about these things. These have been just listed out. That first of all, you have to have the skills to achieve that particular project completion with safety and environmental protection measures, meeting all these specifications and criteria, manage the project within the budget, within the time, take care of your team, guide your team, mentor your team in such a manner that there's no conflict between the team members and they are all working together, making their synergy to achieve the goals. Supervise the progress on time to time basis, oversee daily activities, and ensure tasks are executed as planned. You also verify the compliances and specifications. If there are any non-compliances, that is to be reported immediately and got it rectified. Monitor the compliances with the law, the industry, and environmental practices and regulations, and maintain a detailed record of each activity so that it can be a record and reference for future projects. Thank you, guys. Thank you for listening to me. And I hope and trust if you follow all these principles, basic principles, you will always be successful in your career and prospects. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for taking the time to be with us today and sharing your valuable insights. Now we will open the floor for questions. I would like to invite Ayush to ask questions from the audience. Ayush? Thank you, Mr. Sir, in today's fast-paced world where technology are advancing rapidly, many of our schools and colleges still follow outdated systems. For students to enhance their skill, they often have to take initiative on their own. However, managing time becomes a significant challenge. For example, in our colleges, there is strong emphasis on full attendance.
And if we spend all our time attending classes from morning to till evening, it becomes difficult to focus on improving our skills. So, how can we effectively balance skills development without our college studies effect? वेरी गुड क्वेश्चन. अरे मैं आपको रिकैपिचुलेट करता हूँ माय ओल्ड डेज व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. I don't know how is the, transactions these days today. We also attended all the classes right from 10 a.m. to 5 p.m. और हम लोगों का कॉलेज जैसे स्कूल लगता था ना वैसे ही लगता. And believe me, in my first attempt, I cleared the UPSC examination. Okay, and I must inform you that I was the highest scorer in theory marks. So our teachers were so good, taught it actually knowledge to me at that time. As far as your technology part of it comes, you have a real application for that. The curriculum of the college should also include all those technologies in their curriculum. I would request if they are lacking in any manner, they should improve upon it. Second most important thing is whatever you are reading or you are studying in your colleges, they are giving you only the basic knowledge, basic concepts, and when you go in a particular project, you when you work on that particular project, you learn while you work. So these are the my opinion, but of course college is most important. Unless you know the basic concepts, the higher technology or higher things, how can you learn? आज की बात हम आपसे करते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डिजाइन सॉफ्टवेयर आ गए हैं. आप ब्रिज डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग्स डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स जो आ रही हैं उनकी डिटेलिंग पार्ट एबिसमली इनकरेक्ट होती है. क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे कैड में डिजाइन कर रहे हैं उन्हें ये कंसेप्ट नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, किधर नेगेटिव मूवमेंट्स होंगे, किधर पॉजिटिव मूवमेंट्स होंगे, किधर टेंशन आएगा. सो डिटेलिंग पार्ट ऑफ द रिइंफोर्समेंट समटाइम्स इज मिसिंग या इरोनियस. ये बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आपको जानना चाहिए. इसलिए मेरा आपसे तो यही कहना होगा कि क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करें, और यदि आपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रखे हैं तो किसी भी कंपटीशंस में आप निकल पाएंगे. मेरे ख्याल से मेरा आंसर आपको ठीक लगा होगा. Yes, sir. Sure, sir. I would like to ask one more question. Sure. Yes, sir. In meeting, your advice is speaking only when asked. So, sir, how can we still make valuable contribution or share ideas in such situation without overstepping or speaking out to turn? You see, when I was discussing that part of it, suppose you are attending a meeting called by a CEO, Chief Executive Officer of an organization, and you are the junior most person. Your senior, say you are an assistant engineer, your boss is executive. Executive is presenting a case before your chief engineer, and somehow your executive has missed something, but you have the right executive. Sorry, sir. Your voice is not coming correctly. So I think there is a technical issue with your mic. Mic is same, laptop is same. Is it? Yes, sir. Now we are audible. Okay. Yes, now it's okay. So this will not be a correct behavior that you speak surpassing your executive engineer or boss.
This will not be taken in good sense even by your chief engineer. Once, if your chief engineer allows you to speak, then you must speak. But the second part of it, when you say if you'll not get an opportunity to present your views, then how will you learn? So there are so many meetings which are taken by the team leader, where you have all the opportunities to speak. And that's why I talk for the transactional analysis, where the team leader has to allow all the participants, all the team members to make an adult transaction. That means they have to propose their ideas, their thoughts, and if they are okay, they have to be followed without any consideration that whether you are a junior officer or a senior officer. Right? Thank you. Thank you, sir. If anyone else from the audience has any other questions, please feel free to ask. Yes, Good ma'am. evening, sir. Yes, ma'am, you can ask. Good evening, sir. How much dressing sense is matter to improve our personality? Can you repeat the question, please? Sir, I am asking like how much dressing sense is matter to improve our How personality? much? Dressing sense, sir. Blessings. Dressing. She means dressing sense. I'm not able to. I mean fashion dressing sense. Dressing sense as in fashion. The clothes, how the clothes we wear, how can they reflect our personality? You mean to say what you wear? Okay. I mean dress sense. Yes. ओके so tell me I mean देखिए आज की स्थिति में जो आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और इनफैक्ट यदि आप ओवरसीज काम कर रहे हैं तो डजंट मैटर कि आप क्या पहने हुए हैं लोग शॉर्ट्स पहन के बाथरूम ड्रेस पहने हुए ऑफिस में पहुंच जाते हैं काम करते हैं बट in a structured organization where you have to I mean not only related to your desktop only. You are meeting peoples, you are meeting your officers, you are meeting your teammates. Your dress must be a presentable type of dress. You should look, I mean, in such a manner, in such a, I mean, attire, लोग आपको देख के ही आपको इज्जत की नज़र से देखें इसलिए आप जरूरी है कि आप एक ऐसी ड्रेस पहने जो कि लोगों के माइंड में आपके प्रति एक थोड़ी सी श्रद्धा लेके आती है या इज्जत लेके आती है यदि आप ऐसे ड्रेस पहनते हैं जो कि आई मीन कैजुअल हैं बहुत ही कैजुअल हैं दे आल्सो आई मीन पुट्स ए कैजुअल आई मीन impression on the others so this is very important dress is very important okay Okay. Now, Rohit sir. Good evening, sir. good I'm evening Rohit Shukla. I'm Rohit Shukla, 2006 pass out, working in okay DRDO. Sir, आपका presentation, sir, I think more than students, it is very apt for working professional. With your each and every line, I am able to relate the framework where I'm working, what I'm doing wrong, and what I'm